Hello friends, today we'll see the moment distribution method. This is the method of structural analysis. Now, what is mean by structural analysis? In our day-to-day life, we come across various structures like multi-storied buildings, dams, bridges. ये जो structure है, these structures are subjected to concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varying load. तो ये जो लोड्स है ये स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करने रहते हैं तो दे हैव टू ट्रांसफर इट फर्स्ट टू द सपोर्ट एंड देन टू द ग्राउंड. कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. स्ट्रक्चर पहले इन लोड्स को सपोर्ट पे ट्रांसफर करता है देन टू द ग्राउंड. सो व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस लोड acting on the structure, the member of the structure are subjected to internal forces like axial force, shear force, bending moment and torsional moments. To analyze these forces, these internal forces developed in the member is known as structural analysis. I am repeating, डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट होते हैं. जब स्ट्रक्चर ये लोड को ट्रांसफर करता है टू द ग्राउंड, सो व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस लोड टू द ग्राउंड, स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो है वो इंटरनल फोर्सेस डेवलप करते हैं. इंटरनल फोर्सेस कौन से? एक्सियल फोर्स, shear force, bending moment and torsional moment. तो to analyze these forces, these internal forces, मतलब to find out these internal forces is nothing but structural analysis, and moment distribution method is one of the method to find out the moment. ये चार इंटरनल फोर्सेस जो मैंने बताया उसमें से मोमेंट निकालने की प्रोसेस है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. Nowadays we have computer softwares, well developed software, so ये easily निकल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था तो हैंड कैलकुलेशन से ही निकालने पड़ते थे मोमेंट्स. सो तब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाइडली यूज्ड होती थी. सो वी विल सी नाउ व्हाट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. It is also known as Hardy-Cross method because this was developed by Professor Hardy-Cross in 1930. Then it provides a convenient means of analyzing statically indeterminate beams and frames by simple hand calculations. It is basically an iterative process. Iterative मतलब repetitive. Particular number of cycles perform करने पड़ते हैं until we get the desired accuracy. उसे iterative process कहते हैं. Now there are four important terms that one should know before solving the problem by moment distribution method. First is carryover moment, then carryover factor, then stiffness and distribution factor. So what is carryover moment? When a moment is applied at one end of a member, allowing rotation of that end and fixing the far end. Some moment develops at far end also. This moment is called as carryover moment. ये एक बीम है जिसका एक सपोर्ट A है, एक B है, तो एक हिंज सपोर्ट है और एक फिक्स सपोर्ट है. अब यहाँ पे M इज द अप्लाइड मोमेंट है. दिस इज द अप्लाइड मोमेंट. नाउ क्या कहना है इनका? व्हेन अ मोमेंट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ ए मेंबर अलाउइंग रोटेशन ऑफ दैट एंड. यहाँ पे एक मोमेंट अप्लाई की है अलाउइंग रोटेशन, थीटा ए इज द रोटेशन, अलाउइंग रोटेशन ऑफ दैट मेंबर. अब यहाँ पे ये कर्व देखिए, ये जो डिफॉर्मेशन का कर्व बताया है यहाँ पे थीटा जीरो है, स्लोप इज जीरो क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है और ये हिंज सपोर्ट है. Now when a moment is applied at one end of a member allowing rotation of that end and fixing the far end मतलब जो opposite end है, जो opposite end है उसे fix किया, उसे far end कहते हैं. And fixing the far end, some moment develops at far end also. This moment is called as carryover moment. When you apply a moment M at one end जहाँ पे rotation possible है, तो what is the property of hinge support?
It resists the vertical reaction, it resists the horizontal reaction, but it can't resist the rotation. ये rotation allow कर देता है. And what is the property of fixed support? It resists the vertical reaction, it resists the horizontal reaction, and it also resists the moment. तो इसलिए ये सपोर्ट कुछ फैक्टर फिक्स सपोर्ट की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कैरी ओवर मोमेंट. सो एम डैश इज आवर कैरी ओवर मोमेंट एंड एम इज आवर एक्चुअल मोमेंट. नाउ कैरी ओवर फैक्टर, तो जो ट्रांसफर कर रहा है इट इज ट्रांसफरिंग बाय सम फैक्टर. जैसे अगर ये हिंज है, ये डेफिनेटली दिस इज हिंज एंड दिस इज फिक्स. नाउ अगर ये ट्रांसफर कर रहा है तो ये 40 है, तो ये 20 ट्रांसफर कर रहा है टू द फिक्स सपोर्ट. मतलब फैक्टर क्या हुआ? 1/2. द रेशियो ऑफ कैरी ओवर मोमेंट to applied moment is called as carryover factor. M dash by M is nothing but carryover factor. M dash carryover moment by applied moment M. So M dash by M is a carryover factor. The carryover factor represents the fraction of moment that is carried over from the hinge to the fixed end. Hence, in case of beam with the far end is fixed, the carryover factor is 1/2. Like I said already, अगर 40 तुम्हारी applied moment है, then 1/2, 40/2 will get transferred to the far end, which is fixed one. Far end अगर fixed है, तो half moment transfer होगी. If the far end is hinge, अगर वो हिंज है तो कोई मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है मोमेंट रेजिस्ट करने की हिंज सपोर्ट की, वो रोटेट हो जाएगा, इसलिए वहां पे कैरी ओवर फैक्टर 0 है. नाउ स्टिफनेस, moment required to rotate one end by a unit rotation when rotation is permitted at that end is called stiffness of the beam. K is m by theta. The relative stiffness of a member at a joint whose further end is fixed, then K is I by L. Relative stiffness of the member at a joint whose further end is fixed. अगर far end is fixed है तो stiffness क्या हुआ? I by L. And अगर far end hinge है और simply support है, then K is equals to 3/4 of I by L. That we will see in detail when we will solve the problem. Distribution factor. Now when a moment is applied to a rigid joint where number of members are meeting, मतलब कोई ऐसा joint है जहाँ पे एक से ज़्यादा members connect हो रहे हैं, then the applied moment is shared by the members meeting at that joint. This is the applied moment. ये जो applied moment है ये share हो रही है by these members which are meeting at this joint. The ratio of the moment shared by a member to the applied moment at that joint is called the distribution factor of that member. The ratio of the moment shared by a member to the applied moment at that joint is called the distribution factor of the member. ये member ने जितनी share की है, this divided by this is the applied moment is the distribution factor of this member OD. This is O, this is D. Now OA member ने जितनी शेयर की है आउट ऑफ दिस M, ये कैपिटल M जो इस जॉइंट पे अप्लाई हो रही है, ये चारों मेंबर OA, OB, OC एंड OD शेयर कर रहे हैं. तो जितना पोर्शन OA शेयर कर रहा है, OA ने जितनी मोमेंट शेयर की है डिवाइडेड बाय द टोटल मोमेंट, टोटल अप्लाइड मोमेंट M is nothing but the distribution factor. Distribution factor of OA is equals to MOA, moment shared by OA divided by the applied moment M. Or there is another definition. The distribution factor of a member is equal to the relative stiffness of the member divided by sum of relative stiffness of all the members meeting at joint. This we are going to use while solving the problem. K divided by summation K. उस member का distribution factor divided by sum of the relative stiffness of all the members meeting at the joint. K divided by summation of all the K is nothing but distribution factor. Then sign conventions. Which are the sign conventions that we are going to use here? All clockwise moments are taken as positive and all anti-clockwise moments are taken as negative.
Steps in moment distribution method. So step 1, we are going to follow these 8 steps while solving the moment distribution method. So first step is the given continuous beam or the portal frame should be imagined as a series of fixed beam, and the fixed end moment by standard formulas are to be calculated. Then second step is find out the distribution factor at the joint where number of members are 2 or more than 2. If there is only one member at a joint, then distribution factor for that member is 1, provided that the support is simply supported. Now, third step is for overhang portion, distribution factor is 0. Step 4, after entering all these values in the moment distribution table, first attention must be given to end support. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाएगा, उसमें पहले सपोर्ट्स देखे जाएंगे. If the end support is fixed, then there is no need to balance it, and if the end support is simply supported, then it must be balanced, and if it is overhang, then also it must be balanced. Then take the carryover as per the far end and balance the other joint. कैरी ओवर फैक्टर जो है, जैसे सेंटर का अगर हिंज है और साइड फार एंड इज फिक्स, देन 40 का कैरी ओवर फैक्टर क्या रहेगा. इफ द फार एंड इज फिक्स, देन कैरी ओवर फैक्टर इज 1/2, तो 40 का वो 20 हो जाएगा. दैट इज तो एज पर द फार एंड जो भी है उस हिसाब से कैरी ओवर फैक्टर लेके वो मोमेंट निकालनी है. देन लाइक दिस कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल ऑल जॉइंट्स आर बैलेंस. Then the process of one carryover and one balance is known as one cycle. Like I already said, it is an iterative process. मतलब repetitive. तो एक cycle मतलब एक carryover निकालना और एक balance निकालना मतलब एक cycle. If the problem is lengthy, then take sufficient number of cycles so that balancing moment are insignificant as compared to fixed end moment. When you will see the problem in part 2, then you will actually understand the whole process in detail. The total moment under each column must be calculated, and these are the final moments. Then draw the bending moment diagram of that beam or frame. So what you should do as a homework for this part 1, you should write down these 8 steps in your notebook and those 4 definitions, which are the basic definitions for moment distribution method, and see the part 2 where we will see the numerical one example problem in detail.